सो जो आज की जॉब अपडेट है, दिस इज गोइंग टू बी completely वर्क फ्रॉम होम एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम फिजिक्स वाला. And the best part here is here you can earn up to 25,000 per month. So hi everyone, welcome back to Job for Freshers. So Physics Wala is hiring for the post of doubt faculty, and both fresher and experienced candidate can easily apply for this application. So let's see the job role and responsibilities. So as a doubt faculty, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस असाइन की जाएंगी एंड इन द लाइव क्लासेस जो भी बच्चों के डाउट्स रहेंगे आपको उसको रिजॉल्व करना होगा. ओके, सो विद इन अ टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट दिया जाएगा उस टाइम लिमिट में आपको बच्चों के जो डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करना होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ वर्क. तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन इजीली अप्लाई. ओके, सो टाइमिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो है 6 आवर्स फिक्स रहेंगे. ओके, 6 घंटे आपको काम करना पड़ेगा एंड 1 आवर विल बी फ्लेक्सिबल. तो 3 महीने की जॉब होने वाली है एंड दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब. अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा देन देयर मे बी अ चांसेस ऑफ एक्सटेंडेड इन द मंथ्स. Okay, so let's see the skill requirement. So you should have a good knowledge of networking, Wi-Fi and programming. So these are the skills requirement. And apart from this, so these are the subject in which you will be clearing the doubt of the student. That is botany, physics, geology and chemistry and mathematics. And apart from this, जो कि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, that is good communication skills. एंड अगर अभी तक आपने अमेजन और एसेंचर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से अप्लाई कर लेना. ऑल द लिंक्स आर द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई विल पुट द लिंक इन द आई बटन. वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. So let's see how to fill out this application form. Just click here to apply. So you will be redirected to the LinkedIn. Okay, so here you can see doubt faculty contractual job. So यहाँ पे आपको apply पे click कर लेना है. Okay, so the Google form will appear. Now you have to fill out this Google form. First you need to write your name, email ID, phone number. यहाँ से preferred subject, तो यहाँ पे से select कर लेना जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं. So यहाँ पे से आप सेगमेंट चूज कर लेना JE और NET का एंड प्रिफर्ड शिफ्ट टाइमिंग. सो यहाँ पे आप अपने टाइमिंग के हिसाब से आप चेक मार्क कर सकते हैं. एंड हियर अपलोड योर रिज्यूम. इन द एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रेशर पे सेलेक्ट कर लेना. सो इन द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको एनी टाइप कर लेना है. ओके, इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड आर यू इंटरेस्टेड इन 3 मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग. सो यहाँ पे सेलेक्ट यस. डू यू हैव अ पेन, टैब, लैपटॉप, वेब कैम एंड माइक्रोफोन. अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट यस कर लेना. यस बट आई कैन अरेंज. अगर आपके पास नहीं है और यू कैन अरेंज तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना. आई कैन नॉट अरेंज तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना. ओके, सो अगर आपके पास है तो यस में सेलेक्ट कर लेना. पैन नंबर, यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू हैव अ पैन नंबर एज आई हैव टोल्ड इन माई ऑल ऑफ द वीडियोज दैट पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. So right now they are not asking for the Aadhaar number, so mostly they will ask for the PAN number. So now the PAN number recognized as a identity verification, so they will ask you for the PAN number. अगर आपने अभी तक PAN number के लिए अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कर लेना because nowadays it's mandatory to have a PAN card whenever you apply for any jobs, so they will ask you for the PAN card. Okay, and in the DOB यहाँ पे से एंड यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना एंड नोटिस पीरियड में इमीडिएट सेलेक्ट कर लेना एंड क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन. सो वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन, इफ योर resume gets shortlist then you will receive the further mail. So make sure your resume should align with the job requirement. And the job requirement, what does that mean कि इसमें आपको डाउट फैकल्टी के लिए पूछा गया. ओके, what you have to do is अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अपने डिग्री में then you can write that thing in the पर्टिकुलर रेज्यूमे. ओके, जस्ट लेट्स से मैथमेटिक्स. अगर आपके मैथमेटिक्स आपने BSc इन मैथमेटिक्स किया हुआ है और यू डिड योर इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स, राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहता है इंजीनियरिंग में. सो व्हाट यू कैन डू इज ओके आई स्कोर्ड दिस मार्क्स इन द मैथमेटिक्स. लाइक अगर आपने टॉप किया है समथिंग लाइक दैट यू कैन मेंशन इन द लाइक इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मैथमेटिक्स फैकल्टी और द डाउट फैकल्टी. ओके, द सेम अप्लाइज फॉर द अदर फैकल्टीज like chemistry, geology, physics or botany. Okay, so this type of things you can mention in your resume so that it can increase the chance of your resume to get shortlisted. Okay, and if you have any doubt or any question, do let me know in the comment section. And okay, so keep applying for the jobs and keep going and all the best. Or if you had any question or any suggestion, do let me know in the comment section and I will see you in the next video. Till then, take care, stay safe and bye bye.